Welcome everyone. In this video, we will discuss about educational psychology, its meaning, its nature, and the scope of educational psychology. So, before discussing the meaning of educational psychology, first of all, we need to discuss the meaning of psychology. So, psychology is the study of human behavior, and how it is a study of human behavior, let's see. Psychology has special significance in every field of life. All those activities which are performed by men from intellectual, physical, emotional, and social viewpoints are called human behavior in psychology vocabulary. So psychology का स्पेशल सिग्निफिकेंस है हर फील्ड में जो कि एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म की जाती हैं मैन के द्वारा, चाहे वो इंटेलेक्चुअल उसकी बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड हो, फिजिकल उसकी शारीरिक क्षमता से रिलेटेड हो, इमोशनल उसका इमोशनल बिहेवियर जैसे कि इमोशंस होते हैं, कभी दुखी होना, खुश होना या फिर रोना, इस तरह से। एंड सोशल व्यू पॉइंट्स और समाज में उसका कैसा बिहेवियर है कि वो समाज में किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है, आर कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर इन साइकोलॉजी वोकेबलरी. So all these viewpoints are called human behavior in psychology vocabulary. Human behavior is the chief basis of person's proper development and continuous and best nature of the society. So human behavior is considered as the chief basis, as the most important basis of person's proper development. A person's proper development could only be considered when human behavior is taken as important basis for a person's development. और ह्यूमन बिहेवियर को क्यों हम एक इम्पॉर्टेंट बेसिस लेते हैं प्रॉपर डेवलपमेंट का, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो क्योंकि जो मानव है वो एक सोशल एक सामाजिक प्राणी है, और क्योंकि एक मैन इज़ अ social animal, and due to that his behavior in the society is considered as the most important aspect and con- uh, and continuous and best nature of society. So his behavior is considered as the best nature of society. In the series of social sciences, only psychology is the subject which provides information about a person's thoughts, emotions, interests, aptitudes, etc. So in the when we take social science into consideration, psychology is the best subject which provides information about how a person thinks, his emotions, his interest, हिज एप्टीट्यूड एक्सेट्रा. हम उसके हाव भाव, उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, उसको देखकर जो जो उसका उसकी मनोस्थिति है उसको देखकर हम उसके विचार को, उसके इमोशंस को कि कैसा वो फील कर रहा है, उसके इंटरेस्ट को, उसके एप्टीट्यूड्स, उसको कहाँ किस चीज़ में इंटरेस्ट है और कहाँ उसका एम क्या है, उस पर हम लोग जो है विचार कर सकते हैं. साइकोलॉजी अगर सोशल साइंस की बात करें, साइकोलॉजी अगर हम साइकोलॉजी को अप्लाई करेंगे तो हम उसके जो है उसके थॉट्स, इमोशंस, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड्स को ज़्यादा अच्छे से उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे टू हेल्प ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन हिज बिहेवियर. एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस वी कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन हिज बिहेवियर. Attempts have been made to define this subject in various ways. So several attempts have been made for describing this subject. The very first method to attempt, or we can say attempt, to describe this subject was as a science of soul. So in the beginning, psychology was taken as a branch of philosophy. जब बहुत जब साइकोलॉजी को डिफाइन करने की जब शुरुआत हुई तो इसको एक फिलॉसफी का एक ब्रांच लिया गया है. अब तो ये एक इंडिविजुअल डिसिप्लिन है अपने आप में साइकोलॉजी, लेकिन पहले इसको फिलॉसफी का ही एक ब्रांच लिया गया है. द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इन लेटिन इज सिनोनिम ऑफ साइकी लोगोस. सो साइकोलॉजी का जो मीनिंग है लेटिन भाषा में वो है साइकी लोगोस, जिसमें साइकी का मतलब सोल है और लोगोस का मतलब है स्टडी. सो साइकोलॉजी इज देयरफॉर द स्टडी ऑफ सोल. Thus, in the beginning, psychology was defined as a study of soul. The famous Greek philosopher Plato and Aristotle approved psychology in the form of science of soul. So, the two famous Greek philosophers who were
Plato and Aristotle, they approved to this theory of psychology as a science of soul. However, the two philosophers who accepted psychology as a science of soul could not present any satisfactory logic about the form, complexion, or shape of the soul. Since they were not able to describe the soul, its formation, its complexion, its shape, क्योंकि हम सोल को डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी ने देखी नहीं है. एज अ रिजल्ट दिस मीनिंग वॉज ग्रेजुअली नेग्लेक्टेड. सो इसी कारण से उसे निग्लेक्ट कर दिया गया साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोल. And second attempt which was taken into consideration was as science of mind. Another attempt was made during the medieval times, and this attempt was made during the medieval times to define psychology again. Such philosophers such as Pomponazzi described psychology as a subject which studies mind. So, philosophers such as Pomponazzi describe psychology as a subject which studies mind, जो कि brain को study करता है. However, none of such philosophers were able to provide satisfactory reply to the question about the form of the mind, and the situation arises again where they were not able to provide a satisfactory reply regarding the question about the form of mind. How does it act, that how does it behaves, and how can the actions of mind be made concrete, that how can the actions of mind be made in a fixed form. Whatever logics were presented to describe psychology in the form of science of mind or science of brain could not be accepted due to mutual differences. And since there were so many differences in the ideologies of those philosophers during that time, therefore they were not able to come into mutual acceptance, and there were so many differences, mutual differences, and they did not accepted psychology as the uh, form of as a study of mind or science of mind, and all the logics which were presented were rejected. And after that there was several attempts to define psychology as a study, but all of them did not come to a final conclusion. And there was one during the 20th century, the psychology was defined as a science of behavior, which is till date the amongst the best description, and they got the maximum approval. So, psychology is a science of behavior. Efforts were made in the first half of the 20th century to define the meaning of the subject in variable form. So, there were several efforts made during the first half of the 20th century, and after having the studies in the field of psychology deeply, so after studying the psychology deeply, among them, the meaning presented by behaviorists alone got the maximum approval. So, what are the behaviorists? Behaviorists are those who study the behavior of human beings. So, the behaviorist provided um, several definitions and theories, and they got maximum approval. According to behaviorists, psychology has been defined as the science of behavior. So, according to them, psychology is a science of behavior, that how a person behaves in a particular situation. जो उसका हाव भाव है, उसका जो बिहेव, जिस तरह से वो बिहेव करता है, उसको उन्होंने बोल दिया साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी को. अकॉर्डिंग टू स्किनर, psychology studies the responses of human behavior in all kinds of circumstances. So, according to Skinner, the psychology studies the responses, that how a person responds in all kinds of situations related to life. The meaning of responses or behavior is all kind of activities, adjustments, activities and expressions of human beings. So, the meaning of behavior over here is all kind of activities and the adjustments he had to do, and activities and how he express um, a particular individual or a human being express in all kinds of situations or circumstances provided. Definitions of psychology, and uh, hence we got several definitions of psychology.
So first definition of psychology is the positive science of behavior. It was given by Watson. Second one is psychology is the science of behavior and experiences. It was given by Skinner. And third one is psychology is the study of human behavior and human relationships. It was given by Crow and Crow. Meaning and definitions of educational psychology. By psychology is mean that the study of human beings. So psychology is the study of human beings, and now we are going to define educational psychology. So when education is added to psychology, it became educational psychology. And by psychology we mean that the study of human beings, and education has been defined as a process of development of human beings. So education is defined as a study as the development of human beings, and psychology is defined as the study of human beings. So the study of development of human beings is known as educational psychology. On the basis of joining these two words, we can say that science which studies the behavior of human beings and assists in its developmental process is called educational psychology. So, after joining these two words, we came to a conclusion that a science which studies the behavior of human beings and assists in its development. And since education assists in the development process, so the study which helps to which thus we can say that science which studies the behavior of human beings and assists in its development process is called as educational psychology. Different problems related to education can be solved through this science. So different problems in the field of education could be solved by applying this science. It is such an important subject related to human behavior, in which facts are compiled on basis of discovery and observation, and they are used in the field of education in a practical way to make the process of human development easy, natural, and dynamic. So it is such an important subject that through this science different problems related to education could be solved. And the subject related to human behavior, in which facts are different facts are combined on the basis of the new discoveries and in and observation, and they are used in the field of education. And since they are and since they are applied in the field of education to make the process of human development easy, uh, natural, to provide a natural development to the process of development and dynamic. The definitions of education psychology provided by several scholars are as follows. So there has been several definitions regarding educational psychology which are provided by several scholars, and these are as follows. Educational psychology is the application to findings and the theories of psychology in the field of education. It was given by Kolsnik. Educational psychology utilizes those findings that deal specially with the experiences and behavior of human beings in educational situation. It was given by Skinner. Educational psychology describes and explains the learning experience of an individual from birth to old age. It was given by Crow and Crow. Characteristics of educational psychology. Now, on the basis of those definitions, we came to define the characteristics of educational psychology, and these are as follows. Educational psychology is a practical form of general psychology. Since we apply the terms of psychology uh, in the terms of psychology into a practical form, so we can define educational psychology as a general psychology. Educational psychology studies students, and it is a study of human behavior. So educational psychology studies humans, students. Educational psychology studies the factor related to learning and teaching activities. And since this psychology related to education is implied in the field of education, so it studies the factors related to learning, uh, to the learner's ability to learn things,
and the teaching activities, learning and teaching activities. Nature of educational psychology. Now let's discuss the nature of educational psychology. The former nature of educational psychology is based on science, and since psychology is a study of science, is a science of behavior, and hence it is called as and its nature is can be described on the basis of science. In the category of social sciences, it has developed as the most reliable science, and in the category of social sciences, it is the most developed and most reliable science, because through it we can solve the problem of personality and adjustments related to human beings, their behavior in the social context. Whatever effort is made to bring about desired change in the behavior of children through educational psychology, the foundation of all that is rooted in psychology. So psychology जो है वो एक जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी की जड़ों में है, साइकोलॉजी है। तो इसके थ्रू हम जो है डिज़ायर्ड चेंज ला सकते हैं बच्चों के बिहेवियर में, और एफर्ट्स पुट अप कर सकते हैं एक डिज़ायर्ड चेंज लाने में, जो बच्चे हैं उनके एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू। टुडे डिज़ायर्ड चेंज कैन बी ब्रॉट इन चाइल्ड बिहेवियर थ्रू एजुकेशनल प्रोसेस। सो हम बच्चों के जो बिहेवियर है उसमें एजुकेशनल प्रोसेस, उन्हें एजुकेट करके डिज़ायर्ड बिहेवियर, जो डिज़ायर्ड उनमें जो चेंज है, जो उसमें बर्ताव होना चाहिए जिस तरह से उनका, और जो पॉजिटिव उनमें चेंज आने चाहिए, उसको हम चाइल्ड बिहेवियर में एजुकेशनल प्रोसेस उन्हें एजुकेट करके ला सकते हैं। नॉट ओनली द नॉर्मल चिल्ड्रन बट ऑल्सो द हैंडीकैप्ड, डेलिक्वेंट एंड मॉरन चिल्ड्रन कैन बी ब्रॉट अंडर कैटेगरी ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन। सो ना केवल जो नॉर्मल बच्चे हैं बल्कि जो हैंडीकैप्ड हैं, जो कि डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं, जिनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, एक जो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और जो नोटोरियस चिल्ड्रन होते हैं उनको हम नॉर्मल की कैटेगरी में ला सकते हैं। उनको उनको डिफरेंट फील ना करवा के उनको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ अडेप्टेबल बना सकते हैं। इट्स चीफ कॉज आर दोज theories, principles and techniques compiled in psychology which are completely reliable and practicable, and which have been propounded on the basis of inventional techniques of science. So जो उसके जो चीफ कॉजेज हैं और जो थ्योरीज हैं और जो टेक्निक्स है, वो जो है उन्हें साइकोलॉजी में कंपाइल करके एक रिलायबल और प्रैक्टिसेबल बनाया गया है, एंड विच हैव बीन प्रोपाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंशनल टेक्निक्स, जो कि साइंस की जो कि नई नई खोज होती रहती है साइंस में, जो साइंस की जो फीचर होता है इन्वेंशन का, उसमें कंपाइल करके साइकोलॉजी को हमने रिलायबल बनाया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी को। जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं उनको रिलायबल और प्रैक्टिसेबल बना के, और जो साइंस की जो इन्वेंशनल जो टेक्निक्स हैं उन दोनों को कंपाइल करके हमने जो चिल्ड्रन की जो एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उसको हमने रिलायबल बनाया है। द कन्फर्मेशन ऑफ डिराइव्ड कंक्लूजन्स ऑफ साइकोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इनटू प्रैक्टिकल साइंस prove that the nature of educational psychology is scientific. So the confirmation of derived conclusions, after concluding all the confirmations which are based on psychology and on the scientific methods into and its application into practical science, it proves that the nature of educational psychology is scientific. After coming into conclusion, we finally concluded that the nature of psychology is scientific. Crow and Crow have stated that educational psychology can be accepted as applied science. So Crow and Crow have stated that since we are applying the principles of science into psychology, so we can call it as applied science as well, because it attempts to analyze learning, in conformance to principles and facts determined by scientific technique about human behavior.
Thus, the subject matter of educational psychology is based on scientific discoveries, and this can be used for solution of educational problems reliably. And since the subject matter of educational psychology is based on scientific discoveries, and by these discoveries, um, we can use it as solutions for the various problem which are arised in the problem in the field of education. We can use those solutions and solve our problems reliably. The nature of educational psychology is as follows. So after considering several points, we came to conclusion that the nature of educational psychology is as follows. First one is applied science. So educational psychology is applied science. It applies psychological principles in the field of education. We called it as applied science because it gives the practical form to the psychological principles in the field of education. It is applied to study the behavior of learner in educational situations, कि किस तरह से जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उस एजुकेशनल सिचुएशंस में वो बिहेव करता है, कैसे वो बिहेव करता है, उसको स्टडी करने के बाद हमने उसे अप्लाइड साइंस का दर्जा दिया है, social science. As we have discussed earlier, that educational psychology is a social science as it studies human beings and their adjustments in the society. So it studies how a human being behaves in the society and the necessary adjustments it do uh, in the society. Third one is as a positive science. So educational psychology is a science in the sense that it uses all the methods of science for data collection, analysis, and interpretation of data. Educational psychology Educational psychology aims at understanding, predicting, and controlling human behavior in a systematic way. As it employs all the methods of science, it is called as positive science. So, uh, it is called as positive science because educational psychology um, जो है वो, क्योंकि साइंस जो है वो एविडेंस के बेस पर जो है, उसका जो प्रिंसिपल है साइंस का, वो एविडेंस के बेस पर है। और एविडेंस जो है वो हम तब एविडेंस जो है वो डेटा कलेक्शन के थ्रू, उसके एनालिसिस के थ्रू और उसको इंटरप्रेट करके, जो डाटा है उसे इंटरप्रेट करके हम एक एविडेंस जो है वो प्रूफ करते हैं, क्योंकि वो प्रूफ पे होता है। जो साइंस जो होती है, प्रूफ जो हम करते हैं, जो प्रूफ होता है किसी थ्योरी को प्रूफ करना, या फिर अ, अ, किसी भी थ्योरी को प्रूफ करना, और साइंस जो है वो प्रूफ्स के बेसिस पे चलता है। इसलिए, और प्रूफ हम कैसे कर पाएंगे, वो डेटा कलेक्शन, उसके एनालिसिस और उसके इंटरप्रिटेशन के थ्रू ही कर पाएंगे। इस वजह से एजुकेशनल साइकोलॉजी को जो है वो एक पॉजिटिव साइंस के वे में लिया गया है। एम्स और एजुकेशनल साइकोलॉजी का भी वही एम है कि जो अंडरस्टैंड करना, प्रिडिक्ट करना और कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर एक सिस्टमेटिक वे, क्योंकि साइंस जो है वो सिस्टमेटिक वे पे काम करती है, डाटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना और उसको इंटरप्रेट करना। उसी तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी भी है, उसको समझना, प्रिडिक्ट करना और कंट्रोल करना ह्यूमन बिहेवियर को सिस्टमेटिक वे में, एज इट एम्प्लॉयज ऑल द मेथड्स ऑफ साइंस, क्योंकि इसने साइंस के जितने भी मेथड्स हैं उसको एम्प्लॉय किया, उसको अप्लाई किया है, इस वजह से पॉजिटिव साइंस भी बोलते हैं। ग्रोइंग साइंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ ग्रोइंग और डेवलपिंग साइंस, क्योंकि जो साइंस का नेचर होता है वो होता है कि वो कॉन्टीन्यूसली डेवलप होती है, डेवलपमेंट्स उसमें होते रहते हैं। तो इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम लोग क्योंकि वो भी एक साइंस का ही पार्ट है, तो इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम लोग ग्रोइंग या फिर डेवलपिंग साइंस भी बोल सकते हैं। न्यू रिसर्च फाइंडिंग्स आर एन इंसाइट टू द स्टडी ऑफ द चाइल्ड्स नेचर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जो न्यू रिसर्च और जो फाइंडिंग्स हैं वो चाइल्ड का जो नेचर है एजुकेशन की फील्ड में, उसके लिए एक लाइट की तरह है, उसके लिए एक एक मोटिवेशन की तरह है। जो न्यू रिसर्च जो एजुकेशन में जो हम लोग न्यू रिसर्च जो होती है, न्यू रिसर्च और जो नई फाइंडिंग्स होती हैं वो जो है वो चाइल्ड के लिए एक इंसाइट है,
सो जो न्यू रिसर्चेज हैं, और जो जिस तरह से जो नई रिसर्चेज और नई चीज़ें जो खोजी जाती हैं, आर एन वो एक लाइट के एक लाइट एक हेल्प की तरह काम करती है, कि चाइल्ड के जो नेचर हैं उसको एजुकेशन के फील्ड में उसको समझना, और एक सोर्स की तरह काम करती हैं जो नई रिसर्च और फाइंडिंग्स होती हैं. It is a continuously growing discipline day by day. Or since this educational psychology is a continuously growing discipline day by day, therefore we can also define it as a growing science. Educational psychology is not a normative science like logic or ethics. सो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, हम उसे नॉर्मेटिव जो नॉर्मल साइंस है जो कि लॉजिक्स और एथिक्स के बेसिस पे होती है, उसको हम सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं कर सकते, बिकॉज इट डील्स विद फैक्ट्स एज दे आर, क्योंकि वो फैक्ट्स को जैसे वो हैं उसको वैसे ही प्रस्तुत करती है. इट स्टडीज द चाइल्ड्स नेचर एज दे आर. सो जैसे कि जो चाइल्ड का नेचर है उसको वैसा ही वो उसको डिफाइन करती है, उसमें कोई बायसनेस नहीं होती है, उसको जैसा वो है जिस फॉर्म में है उसको उसी फॉर्म में प्रेजेंट करती है. एंड एज दे परफॉर्म इन डिफरेंट कंडीशंस, एंड देयर बिहेवियर and performance in different conditions and situations. Now let's discuss the scope of educational psychology. So the field of educational psychology is very vast. Several attempts have been made to determine the limits of this science in 1945. So the जो educational psychology है, इसके इसके implications, जो इसके स्कोप है वो बहुत ज़्यादा उसके आयाम है, उसमें बहुत गहराई है. और बहुत से अटेम्प्ट्स जो है इस फील्ड को डिफाइन करने के लिए 1945 में किए गए. द रिलेटेड एजुकेशनल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ द अमेरिकन साइंस काउंसिल डिटरमाइन द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन द फॉलोइंग वेज. So the educational so related to educational psychology, Department of American Science Council determines the scope of educational psychology in the following ways. So American Science Council determined the scopes of educational psychology in many ways. First one was educational psychology studies variable stages of development of human beings on the basis of scientific methods. And since psychology is a study of science, therefore, educational psychology studies variable stages of development of human beings on the basis of scientific methods. Second one is under it are included different aspects of child learning. So, child learning are included as one of the aspect of scope of educational psychology, that how a child learns in different circumstances. Third one is it studies related problems of personality and adjustment of human beings as related to education. So related to education, it studies problems of personality and the child's ability to adjust and his personality, और जो उसका रवैया है एजुकेशन को लेकर इसमें डिटरमाइन होता है. It functions for the development of intelligence, interest, aptitude, evaluation, performance, and measurement techniques. So, the further functions of it is to develop the intelligence, उसके बौद्धिक क्षमता का विकास करना, इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट का विकास करना, एप्टीट्यूड, जो उसका एप्टीट्यूड है, उसका रवैया है, उसको लेकर उसका डेवलपमेंट करना, इवैल्यूएशन, उसका एवैल्यूएशन परफॉर्मेंस, जो उसकी मूल्यांकन करने की जो परफॉर्मेंस है उसका विकास करना, एंड मेजरमेंट टेक्निक्स, और उसके आकलन का विकास करना. अकॉर्डिंग टू गैरिसन, चिल्ड्रन एंड देयर डेवलपमेंट, education, learning, motivation, guidance, and adjustment, and related problems are studied under educational psychology. So, according to Garrison, he defined
that children and their development, evaluation, learning, motivation, guidance, and adjustment and related problems are studied under education psychology. So जो बच्चे हैं उनका जो विकास, उनका जो मूल्यांकन है, उनकी जो याद करने की क्षमता है, उनका जो मोटिवेशन है कि किस किस चीज़ से वो मोटिवेट हो रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो उनमें एक अ, सकारात्मक ऊर्जा ला रही है, एक जो उनको कॉन्टिन्यूसली उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर रही है, जिससे वो बेटर कर पाएँ। और गाइडेंस जो है, और एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और जो उनको क्या कैसे गाइडेंस उनको मिलना चाहिए, और जो एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इस सबको एजुकेशन साइकोलॉजी के अंडर स्टडी किया जाता है। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू द कंडीशंस व्हिच इन्फ्लुएंस लर्निंग। सो क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट मैटर है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, वो रिलेट करता है कंडीशंस जो कि इन्फ्लुएंस करती है लर्निंग, जो कि जो सिचुएशंस हैं जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती हैं, वही जो है सब्जेक्ट मैटर है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। जो कंडीशंस उसकी लर्निंग को, चाहे वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टीचर हो, टीचिंग मेथड्स हो, ये जो हैं ये सब्जेक्ट, ये चीफ कैरेक्टर्स, ये जो चीफ सब्जेक्ट मैटर है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। According to Skinner, all those information and techniques are included under education psychology which are helpful in taking proper comprehension and learning process towards effective direction. So Skinner के according जो information और जो techniques है जो include की गई हैं educational psychology में, वो हेल्प विच आर हेल्प जो कि हेल्पफुल हैं एक प्रॉपर कॉम्प्रीहेंशन, पूरा एक उसको कॉम्प्रीहेंड करने में, और लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव डायरेक्शन की तरफ पुश करने में, जो कि है हेल्पफुल है। 6 major areas covered by educational psychology are the learner, the learning process, the learning situation, the teaching situation, the evaluation of learning performance, and the teacher. So these are the 6 major areas which are covered by educational psychology, which are the learner, the learning process, the learning situation, the teaching situation, evaluation of learning performance, and the teacher. So first of all, we will discuss the learner. Educational psychology acquaints us with the need of knowing the individual and deals with the techniques of knowing him well. So educational psychology, it helps us with the need of knowing the individual and deals with the techniques of knowing him well. Um, that it deals with that it deals to know the individual, to know a person, and the techniques to know him well, since it studies its behavior in various circumstances. So it helps to know a person. Following are the topics studied included in, and these are the topics which are studied inside it. The innate abilities. Innate abilities means the abilities which are which are present in him due to his heredity, or which are given to him by its ancestors, are known as the innate abilities. And capabilities of the individual differences and their measurements, and its capabilities, और उसकी जो क्षमताएं हैं इंडिविजुअल की, and the capabilities of individual differences and their measurements, और जो उसकी जो क्षमताएं हैं, उसकी जो हर एक इंडिविजुअल क्योंकि डिफरेंट होता है, इसलिए उनकी जो डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं, हर एक इंडिविजुअल में यूनिकनेस होती है, एक यूनिकनेस होती है। इस वजह से जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं, और उनके जो मेजरमेंट्स, जो उसका आकलन है, कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस बिहेवियर ऑफ द लर्नर,
So conscious means when he's in aware state, और unconscious means जबकि वो aware state में नहीं होता है उस समय उसका behavior, the characteristics of his growth and development at each stage beginning from childhood to adulthood. So the characteristics of his, that how he has been grown up, the environment in which he has been grown, and his development stage from the beginning of childhood to adulthood. So these are all defined in it. Basically, the how it affects the learner, as educational psychology acquaints us with the need of knowing the individual and deals with the techniques of knowing him well. To know a person, and following topics are included in it: his innate abilities, which means the abilities he are born with, which are provided through heredity, and capabilities of the individual differences and their measurements, and his the uniqueness in him, his difference of his personality, and their measurement, और उसका जो मूल्यांकन है वो आकलन, measurement means उसका जो आकलन है. Conscious as well as unconscious behavior of the learner, the characteristics of his growth, उसके जो ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो उसकी डेवलपमेंट हुई है बिगनिंग से, चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक. The learning process, after knowing the learner and deciding what learning experiences are to be provided, the emerging problem is to help learner in acquiring these learning experiences with ease and confidence. So after knowing the learner and deciding what experiences are to be provided, the emerging problem is to help learner in acquiring these learning experiences. कि जब हमने लर्नर के बारे में जान लिया और ये भी पता लगा लिया कि उसको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हमें प्रोवाइड करने हैं, तो तब एक नई प्रॉब्लम इमर्ज हुई, जो कि थी कि अब कैसे लर्नर की मदद की जाए कि ये सारी जो ये एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत सरलता के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ उसे समझ पाए, वो उसको एक्वायर कर पाए, उसको अपने अंदर ट्रांसफ़र कर पाए. Hence it deals with the nature of learning and how it takes place, and contains the topics such as laws, principles and theories of learning. और इसी वजह से जो है वो जो लर्निंग प्रोसेस है वो डील करती है लर्निंग के नेचर से, और कैसे वो प्लेस करता है, कैसे किस तरह से जो जो चाइल्ड की जो लर्न करने की जो एबिलिटी है वो प्लेस करती है. एंड कंटेन्स द टॉपिक्स, और ये टॉपिक्स कंटेन्स करती है जैसे कि लॉज ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग. Remembering and forgetting, perceiving that how he remembers, and how the remembering ability, the forgetting ability of child, the perceiving, how he perceive things, how he take things, concept formation, that how a concept is formed in his mind, his thinking ability, his reasoning process, that how he is able to reason, uh, problem solving, that how he प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है जिसमें केस स्टडीज़ इन्वॉल्व होती है, जिससे इमोशनल डेवलपमेंट हो पाता है. ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, that how training, the things he has been trained is transferred into him, ways and means of effective learning, and how effectively he learns. Learning situation. So the third topic is uh, third topic is learning situation. It also deals with the environment factors and learning situation which come midway between the learner and the teacher. Topics like classroom, climate, and group dynamics, techniques and aids which facilitate learning, evaluation techniques and practices, guidance and counseling, etc., which help in the smooth functioning of the teaching learning process. So, third problems which come is the learning situation, and it particularly deals with the environment factors
and learning situation, which comes in the middle way between the learner and the teacher. So the environment, learning environment, comes as a chief problem between the learner and the teacher. Topics like classroom climate, how the uh, climate of classroom, which means it is an interactive phase or पैसिव दैट एक्टिव फेज दैट जिसमें एक्टिव फेज जिसमें कि चाइल्ड का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें इंटरेक्ट करता है टीचर और चाइल्ड के बीच में इंटरेक्शन होता है, बजाय कि वन वे इंटरेक्शन जिसमें कि सिर्फ टीचर ही इंटरेक्ट कर रहा है. तो वो क्लासरूम क्लाइमेट हुआ. एंड ग्रुप डायनेमिक्स टेक्निक्स एंड एड्स विच फैसिलिटेट लर्निंग, इवैल्यूएशन टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक्सेट्रा. तो उसमें ये सब बहुत से आयाम जुड़े होते हैं जो कि लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं. और मूल्यांकन की जो टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस हैं, गाइडेंस और काउंसलिंग है, जो कि हेल्प करते हैं स्मूथ फंक्शनिंग में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की. And fourth one is teaching situation. So it suggests the techniques of teaching. So it is related with the techniques of teaching. It also helps in deciding what learning situation should be provided by teacher to learner according to his mental and physical age. So in this process, the teacher the teacher decides that what kind of learning to be provided as per the mental and physical age of of the child, and according to his previous knowledge and interest level. By describing the learner's characteristics, and after describing the characteristics of learner, his interest level, and the previous knowledge acquired by him, uh, the teacher comes into the conclusion of his characteristics and what teaching aids are appropriate for the particular subject. And to teach a particular subject, the teacher decide what kind of aids he needs. For example, while teaching the subject of social science, the one of the aid which are used by teachers are the maps of particular country or the world. Evaluation of learning performance. So the fifth characteristic is of evaluation of learning performance, कि लर्निंग परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करना. मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर. सो मेन ऑब्जेक्टिव जो एजुकेशन का है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट करना जो स्टूडेंट है उसका. इट इंक्लूड्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी. इसमें कॉग्निटिव मीन्स टू नो वट एस्पेक्ट, affective to psychomotor means to do aspect, affective means to think what aspect of personality. तो पर्सनालिटी की जो थ्री डोमेन्स हैं, जो नॉलेज की जो थ्री डोमेन्स है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इसको अफेक्ट करता है. Educational psychology suggests various tools and techniques for assessment and evaluation, such as performance test, oral test, and written test. So, educational psychology जो है various tools और techniques जो बच्चों के आकलन और मूल्यांकन के लिए जो various tools और techniques है उनको suggest करता है. जैसे कि परफॉर्मेंस टेस्ट, जो बच्चों का परफॉर्मेंस टेस्ट लिया जाता है वो. ओरल टेस्ट, जो ओरली टेस्ट लिए जाते हैं. और जो रिटन टेस्ट जो रिटन फॉर्मेट में लिए जाते हैं. इट डज नॉट स्टॉप एट मेजरमेंट ओनली. तो ये सिर्फ उसके आकलन पर ही नहीं रुक जाता है. आफ्टर द टेस्टिंग रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट आर एनालाइज. सो उसके जो टेस्ट लिए जाते हैं उस पे उसका एनालाइज किया जाता है. उसके जो परफॉर्मेंस है उस पर ध्यान दिया जाता है और उसके कॉजेज़ पे कि उसका पुअर परफॉर्मेंस है तो क्यों है, अगर वो पिछड़ता जा रहा है तो वो क्यों पिछड़ रहा है,
in any aspect of the development is corrected by adjustments. So जो उसके जो स्टडी के बेसिस पे नेसेसरी एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं एंड आर हेल्प बाय गाइडेंस एंड काउंसलिंग. सो उसके बाद उसको उसके बेसिस पे गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है. स्टडी हैबिट, एग्जामिनेशन टेक्निक्स एंड लर्निंग स्टाइल्स आर एनालाइज्ड and help the learner so that he can overcome the difficulties. So एग्जामिनेशन टेक्निक्स और लर्निंग स्टाइल्स को, जो चाइल्ड का जो लर्निंग स्टाइल है और किस तरह से वो अपना पेपर या टेस्ट अटेम्प्ट करता है, उसको एनालाइज किया जाता है. उसके बाद लर्नर को हेल्प किया जाता है कि वो इन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर पाए. द टीचर. So one of the important aspect is the teacher. Educational psychology emphasizes the need of knowing the self for a teacher to play his role properly in the process of education. So जो educational psychology है वो जो emphasize, वो जोर देती है कि टीचर पहले खुद को जान पाए, अपना रोल जान पाए, अपने अपने टीचर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको जान पाए, ताकि वो अपने रोल को प्रॉपरली प्रोसेस कर पाए एजुकेशन में, और एक चाइल्ड के लिए गाइडेंस और मोटिवेशन के फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट कर पाए. इट थ्रोज लाइट ऑन द एसेंशियल पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग. सो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो जो एसेंशियल, जो कि ज़रूरी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं टीचर के, उनके इंटरेस्ट, उनके एप्टीट्यूड्स और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग के, उसके ऊपर जोर देता है. सो एज टू इंस्पायर, हेल्प टीचर हैंडल द स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड एंग्जाइटी बाय गिविंग इंसाइट इन देयर ओन पर्सनैलिटी. और जिस वजह से जो टीचर है उनको इंस्पिरेशन मिल पाएगी, हेल्प मिल पाएगी, ताकि वो स्ट्रेस और जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है उसको ओवरकम कर पाएँ, और जो एंग्जाइटी है एक अपनी पर्सनालिटी में एक लाइट, अगर वो दृष्टि डाल पाएँ, जिससे उन्हें हेल्प मिल पाएगी कि वो अपने जो कॉन्फ्लिक्ट हैं और जो एंग्जाइटीज़ हैं उनको ओवरकम कर पाएँ. दैट्स ऑल. थैंक यू.